Hello students, welcome to IAE. In this video, we are going to discuss a numerical on the logic functions. So let's get started. So in this numerical, what is written? What is the minimum number of NAND gates required to realize the Boolean function? और Boolean function क्या given है? ये वाला Boolean function given है. F of A, B, C, that means these are the variables A, B, C. And A, B bar, C is the function. Now we need to find the minimum number of NAND gates required to realize this function. So first we will draw this function using the basic gates only. So मेरा function given है A, B bar, C. So now first we will do this one, then this one. So we will take our input A. So this A input, and we have to find the B bar. So if there is the input B, so we have to convert it into B bar. So this is the NOT gate, you can see. So यहाँ पे B और यहाँ पे क्या आएंगे आपका B bar, यहाँ पे आपका A. अब ये दोनों क्या है AND ऑपरेशन पे है. सो AND ऑपरेशन मतलब ये दोनों जाके एक AND गेट में इस तरीके से इनपुट होंगे. सो नाउ दिस विल गिव अस A B bar, A AND operation B bar. Now we have to add another input, that is C. So we will take the input here. So this is the C input. Now we should have another AND gate. So this is the AND gate. So this A and B bar will go as the input, and here it will go as the input. So it will give us the value, you can see A, B bar and C. So this is the realization of this function using the basic gates only. But आपका क्वेश्चन पे क्या गिवन है? क्वेश्चन पे आपका गिवन है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स आपको चाहिए. सो दैट मीन्स वी हैव टू रियलाइज हाउ मेनी NAND गेट्स विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस बेसिक सर्किट डायग्राम. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपका AND गेट है, यहाँ पे भी आपका AND गेट है. तो ये वाले AND गेट को अगर NAND गेट में कन्वर्ट करना है तो क्या चाहिए आपको? ये वाले पोजीशन पे एक बबल चाहिए, तभी तो NAND हो जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी एक बबल चाहिए, तो ये वाला गेट मेरा NAND गेट हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर बबल डालेंगे हम लोग तो दैट मीन्स नॉट ऑपरेशन होगा. तो उसके लिए मुझे और एक नॉट गेट यहाँ पे अटैच करना होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी एक नॉट गेट अटैच करने होंगे, तभी ये दोनों नॉट कैंसिल आउट हो सकता है. अब देखिए तो ये वाला जो गेट है मेरा, ये वाला गेट अभी क्या हुआ, ये मेरा NAND गेट आया. सिमिलरली यहां पे भी NAND गेट आएंगे. सो दो NAND गेट तो मुझे चाहिए. अब ये जो नॉट गेट है, कोई भी नॉट रियलाइजेशन के लिए, दैट मींस ये जो नॉट गेट्स हैं, ये सारे नॉट गेट्स को आपको NAND में कन्वर्ट करना होगा. सो NAND में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने NAND गेट चाहिए एक नॉट गेट के लिए? तो ये मेरा नॉट गेट था, दिस इज द नॉट गेट. सपोज दिस इज X, so it will be X bar. So if we want to realize this NOT gate, then what using the NAND gate? So we have to find that. So यहाँ पे एक NAND gate चाहिए आपको. So this is the NAND gate, और NAND gate का दो इनपुट होते हैं और NOT gate का एक इनपुट. So that means we have to short circuit this one, two inputs, and here we have to apply this input. So यहाँ पे X, अब यहाँ पे होंगे आपका X bar, because यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी X, यहाँ पे भी X. So ultimately आपका जाएंगे X plus X into X bar. So now ultimately आपका X bar आएगा. So in this way we can realize this NOT gate using only one NAND gate. That means ये वाले NOT gate के लिए आपका एक NAND gate चाहिए.
Similarly, for this NOT gate, you will need only one NAND gate. Similarly, for this NOT gate, you will require only one NAND gate. So, how many NAND gates do you require? 1, 2, 3, 4, 5. That means we need minimum 5 NAND gates to realize this function. So, the answer will be minimum NAND gate required is equals to 5. So, this is the answer of this question. That means we need minimum number of NAND gates as 5. So, hopefully you have enjoyed this video and thank you.